अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 100 MCQ डिस्कस करेंगे। ये 100 MCQs उन कैंडिडेट्स के लिए जो वन पेपर MCQ की तैयारी करते हैं और उसमें जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है उसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो पास पेपर से लिए गए हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर की और नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है और लेक्चरार्स कंप्यूटर लेक्चरार की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओरेकल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। मैकफी जो है ना, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये अलग से सवाल आता है कि मैकफी क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट यूनिट डिवाइस। प्लॉटर इनपुट यूनिट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे इनपुट यूनिट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनकी जो मुकम्मल लिस्ट है वो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सूटेबल फॉर, तो ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है। इसके लिए अलग से सवाल आता है कि फोर्ट्रॉन क्या है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस एक और सवाल आता है। और तीसरा सवाल इसके वाले से ये आता है कि फोर्ट्रॉन जो है ना, इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो ये है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FOR से फॉर्मूला और TRN से ट्रांसलेशन, ये इसकी एब्रीविएशन बनती है। What was the expected feature of fifth generation computers when Japan started FGS? तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग था। FGS क्या है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर साइंस। Which of the following memory medium is not used as main memory system? तो मैग्नेटिक टेप जो है ना, ये मेन मेमोरी सिस्टम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। The storage subsystem in a microcomputer consists mainly or media with varying capacities. तो इसका आता है मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज सबसिस्टम। Programs designed to perform specific task is known as, तो इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंपल इंपॉर्टेंट। What is a compiler? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। A compiler converts the whole of a higher level language code into machine code in one step. तो कंपाइलर क्या करता है? एज ए होल ट्रांसलेशन करता है ओनली वन स्टेप में। ये सवाल बहुत अहम है। कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, तो माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। Which of the following requires large computer memory? तो ग्राफिक्स को, इमेज को, वॉइस को लार्ज मेमोरी रिक्वायर होती है। Which of the following is machine independence program? तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है। When was the first electro machine मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप? तो 1944 में पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप हुआ था। बहुत अहम बेसिक कंप्यूटर के हवाले से। नेक्स्ट सवाल था, द फर्स्ट मशीन इज टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस वाज, उसका नाम था मार्क 1। विच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस? तो पीटाबाइट एक लार्जेस्ट स्पेस है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, तो वो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की बहुत एब्रीविएशन भी पूछ ली जाती है, बल्कि अक्सर पूछ ली जाती है। यूनिमैक ये एक एब्रीविएशन है। ये क्या है? ये है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। The basic operations performed by a computer are, तो arithmetic operation, logical operation, storage and relative operation, ये सारे के सारे हैं। तो जितनी भी आपको कीज अगर चेक करनी हो, अगर आपको कीवर्ड्स देखनी हो कौन सी कीज हैं, वो भी आपकी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा हम एक वीडियो बनाएंगे एब्रीविएशन पर, और वो एब्रीविएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर, ये हमारे अरिथमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज, ये सारी उसकी बेसिक ऑपरेशन में आते हैं। The two major types of computer chips are, तो उसकी हैं प्राइमरी मेमोरी चिप और मैक्रो प्रोसेसर चिप। The microprocessors are switching devices are for which generation computer? तो इसका ताल्लुक 4th जनरेशन से है। What is the main difference between a mainframe and a supercomputer? तो इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है बात का। तो सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs currently। ठीक। ASCII and EBCDIC, इसकी एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये क्या है? कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम्स है। तो इसकी एब्रीविएशन बनती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। CPU की हमने एब्रीविएशन भी पढ़ी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एब्रीविएशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन, तो ये ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस पर डिपेंड करती है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी, ये दोनों हैं ROM एंड RAM। अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम था पहले। इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ RAM,
द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी द 65,536 उसके बनते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये रिप्रेजेंट होते हैं बाइनरी कोड्स के जरिए। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज द POS terminal. A set of flip-flops integrated together is called register. बहुत अहम सवाल। People often call as the brain of computer system central processing unit यानी CPU। ये सवाल इसकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी रद्दोबदल होके ये सवाल बहुत पूछा जाता है। Which is used for manufacturing chips, तो semiconductors यूज होते हैं। The value of each beat in heaven is 5. The first computer introduced in Nepal was IBM 1401. Mnemonic memory trick is used in which of the following language? Assembly language. Instruction in computer language consist of both of above. Which generation of computer is still under development? 5th generation. A register organized to allow to move left or right operation is called shift register. Which was the most popular first generation computer? IBM 650. Multi-user systems provided cost savings for small business because they use a single processing unit to link several dumb terminals. What are the 3 decision-making operations performed by the ALU of a computer? So greater than, less than, equal to. The word processing task associated with changing the appearance of a document is formatting. Nepal brought a computer for census of 2028 BS. This computer was of 2nd generation. Algorithm and flowchart help us to specify the problem completely and clearly. Which statement is valid about computer program? तो ये both A and B understood by a computer, it is understood by programmer. The difference between memory and storage is that memory and storage is, तो memory is temporary and storage is permanent. When was Pascaline invented? तो ये 1642 में इन्वेंट हुआ। Which of the following statement is valid? तो ये सारी स्टेटमेंट वैलिड है। लेडी ऑगस्टा इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। Ada is the daughter of Lord Byron, जो एक इंग्लिश फेमस पोएट थे। ADA is the programming language developed by US Defense. A compiler is a क्या है? तो कंपाइलर की सारी चीज होती है कि ट्रांसलेशन करता है इंस्ट्रक्शंस को ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज की इनटू मशीन लैंग्वेज। बाज को दिन में से कोई एक ऑप्शन दिया जाता है to translate entire source program into machine language program. It is not involved in programs execution. तो ये आप तीनों स्टेटमेंट अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा क्योंकि बाज का इनमें से एक स्टेटमेंट दीजिए तो बाकी तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग होती हैं और एक ठीक होती हैं। What is required when more than one person uses a central computer at the same time? तो इसे कहते हैं टर्मिनल। जो the following is the first computer to use stored programs concept? तो ADSAC। The term gigabytes refers to 1024 megabytes या MB. In which year was UK's premier computing event started? तो 1985 में स्टार्ट हुआ। Once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as automatic. तो ये ऑटोमेटिक काम होता है। What is a brand? तो brand क्या होता है? The name of product or company gives to identify its product in market. Machine language is a, तो ये डिफिकल्ट होती है, मशीन डिपेंडेंट भी होती है और एरर प्रोन भी होती है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, बहुत फेमस। द मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलिबल। व्हाट इज द डाटा व्हेन बेबिज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन? 1837 में। अ स्टोरेज एरिया यूज्ड टू स्टोर डाटा टू कंपेंसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डाटा इज बफर। Computer is free from entire sum and board's room. We call it diligence. Integrated circuits are बस कहती है ICS की एब्रीविएशन पूछी जाती है सिर्फ। Are related to which generation of computers? तो 3rd जनरेशन से बिलोंग करते हैं। CD ROM is a, ये सेकेंडरी मेमोरी है तो यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ था पेपर्स में, none of these बनता था, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी। A hybrid computer resembles both a digital and analog computer. बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। Which type of computers uses the 8-bit code called EBCDIC? तो ये होता है मेन फ्रेम computers. The ALU of a computer responds to the commands coming from control section. बहुत फेमस क्वेश्चन है। Chief component of first generation computers was, बहुत अहम सवाल,
vacuum tubes and valves. To produce high quality graphics in color, you would want to use an plotter. What are the stages in the compilation process? तो उसमें lexical analysis है, syntax analysis and code generation है. बहुत से दिन में सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाता है. Which of the following IC was used in third generation of computers? तो both A and B है, SSI and MSI. The main electronic component used in first generation computer was vacuum tubes and valves. Sorry, ये repeat हो गया. A dumb terminal has a keyboard and screen. 1 millisecond is 1000 of a second. The output quality of a printer is measured by dot per inch. बहुत अहम सवाल. To the following was a special purpose computer. तो वो ABC है. What was the computer invented by Antonov and Clifford? तो ABC computer है. बहुत अहम. To the following storage device can store maximum amount of data. तो वो है hard disk. Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? तो वो है ENIAC. A physical connection between the microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as address bus. बहुत अहम सवाल. High density double sided floppy disk could store of data 1.44 MB. ये भी बहुत अहम सवाल है. ठीक है. Which is considered a direct entry input device. तो वो है, ये सारी हैं, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर एंड लाइट पेन, सारी की सारी. A set of information that defines the status of resources allocated to a process is, तो ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन आ जाती है इसका आंसर. Each set of Napier's bonds consisted of rods. तो वो 11 आते हैं. BCD is binary coded decimal, बहुत फेमस एब्रिविएशन. When was the world's first laptop computer introduced in the market and by whom? तो एप्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1981 में. From which generation operating system was developed? तो थर्ड जनरेशन से. The first firm to mass market a microcomputer as a personal computer was Radio Shack. How many address lines are needed to address each machine location in 2048 multiply 4 memory chip? तो वो इसका आंसर आता है 11. Properly arranged data is called information. A computer consists of memory, central processing unit और input output device, सब पर ये कंसिस्ट करता है. अभी पीछे वाला सवाल जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा, इसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं. बहुत अहम सवाल है. वैसे ये सवाल भी बहुत अहम है. Why are vacuum tubes also called valves? Because they can stop or allow the flow of current. इसलिए कहते हैं vacuum tubes, also called valves कहते हैं. जॉन नेपियर इन्वेंटेड लोगारिथम. तो उसने, ये बहुत अहम सवाल है, जीके का भी सवाल है वैसे ये तो, 1614 में. In an integrated circuit is तो fabricated on a tiny silicon chip. What type of control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at the same time? तो इसका आंसर आता है bus arbitration. Whereas a computer mouse moves over the table surface, the trackball is stationary. Which of the following is used as a primary storage device? तो वो होता है magnetic drum. A high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs. तो होता है digital plotter. Which of the following is not an input device? तो COM यानी computer output to macro film. The accuracy of the floating point numbers representable in the two 16-bit words of a computer is approximately 16 digits. In most of the IBM PCs, the CPU device, drivers, memory expansion slots, and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? उस board का नाम होता है motherboard. Magnetic disks are the most popular medium for direct access. A technical used by codes to convert an analog signal into a digital bit stream is known as pulse code modulation. ये आज के 100 क्वेश्चन से आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, तो आपके जो कंप्यूटर का पोर्शन है, और आप बाकी वीडियोस भी देखते हैं, कीज की जो वीडियोस हैं, मेमोरीज के हवाले से जो वीडियोस है कंप्यूटर की, इसी चैनल पर आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी. तो आपको जो कंप्यूटर का पोर्शन है, यकीनन वो मुकम्मल हल हो जाएगा. बेस्ट विशेस. अल्लाह हाफिज.